Hello friends, welcome to Nursing Current and Practical. So today I'm going to start about case-based scenario MCQs for public health nurse exam. So case-based क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी. फर्स्ट केस है हमारा. A 28-year-old woman from a rural area visit the subcenter for her first antenatal checkup. She is 12 weeks pregnant. She has not received any vaccination yet. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल द मोस्ट अप्रोप्रिएट इम्यूनाइजेशन टू गिव हर ड्यूरिंग दिस विजिट. कौन सा वैक्सीनेशन देना है आपको इस टाइम पे. ऑप्शन ए टीटी. प्रेग्नेंट वुमेन आर गिवन टीटी और डीटी वैक्सीन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर टू प्रिवेंट न्यूनेटल टेटनस. केस नंबर 2. A nurse is visiting a slum area and notice a 2-year-old child with sign of night blindness and dry eyes. Question क्या है, what immediately intervention should the nurse take? As a PHN take. So right is option C. Administer vitamin A dose. Administer vitamin A dose because the sign indicate vitamin A deficiency and immediate vitamin A supplementation 1 lakh international unit is given under the RCH program. Next question. During a school health visit, a nurse find multiple children with fever, rash behind the ear and Koplik spot. And question is, what is the most likely diagnosis? क्या diagnosis होगा if you find the children with the fever and rash and Koplik spot? So the diagnosis will be measles. Koplik spots are pathognomonic of measles, usually seen inside the cheek before rash appear. 4. In a village, 10 people report symptom of vomiting and watery diarrhea within 24 hours. A community function was held day before. एक फंक्शन के बाद 10 लोगों को डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया. सो एट दिस कंडीशन व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस. सो राइट इज बी कॉलेरा. कॉलेरा acute watery diarrhea in the multiple people point to a cholera outbreak likely due to contaminated food and water. Question number 5. An ASHA worker informed that a woman with high-risk pregnancy had not visited the PHC despite repeated advice. So, what is the most appropriate next action for the public health nurse? So, right answer will be option number C. Make a home visit for the counseling. Make a home visit for counseling should follow up with the personal counseling, respecting autonomy but ensuring informed decision making. Some question about the national health program based. जितने भी national health programs रन हो रहे हैं उनसे related MCQs हैं यहाँ पे. So question 1. The National Tuberculosis Elimination Program NTEP aim to eliminate TB by which year? NTEP के दौरान TB किस ईयर में एलिमिनेट हो जाना था. सो राइट इट 2025 present year. India target TB elimination by 2025 earlier than WHO Global 2030 goal. बट अभी तक टीबी एलिमिनेट नहीं हुआ है. जननी सुरक्षा योजना JSY प्रोवाइड कैश इंसेंटिव फॉर. जननी सुरक्षा योजना के तहत कुछ पैसे मिलते हैं, कैश मिलता है. कब? सो ऑप्शन नंबर बी. अगर जितनी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं उनको. JSY इज़ अंडर NHM टू रिड्यूस मैटरनल न्यूनेटल मॉर्टेलिटी बाय एनकरेजिंग सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. सो उनको पैसे भी मिलते हैं आफ्टर डिलीवरी. राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज अ टारगेट एज ग्रुप फॉर वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम. व्हाट इज द टारगेट एज ऑफ दिस प्रोग्राम. सो टारगेट इज 10 to 19 year.
WIFS, weekly iron and folic acid supplementation, target adolescent girl in school and out of school setting to reduce iron deficiency anemia. Next, which program focus on early diagnosis and management of non-communicable disease? कौन सा प्रोग्राम फोकस में करता है और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करता है ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का? सो सी, MPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, diabetes, cardiovascular disease and stroke, aim at NCD screening and control non-communicable diseases. Next, mission इंद्रप्रस्थ aim to, ये तो हमें we have done, achieve full immunization coverage. Mission इंद्रप्रस्थ is launched to reach unvaccinated and partially vaccinated children, especially in undeserved area. Next case base है, a 32-year-old man present with chronic cough for 3 weeks, weight loss, night sweat, sputum AFB test comes positive. So पूछा है, under NTEP guideline how should the patient be categorized? अगर ये सारे सिम्टम हैं एंड विद दिस AFB पॉजिटिव है तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये वाला TB? सो दिस इज़ दी C, confirmed TB case. A person with sputum positive for AFB, acid fast bacilli, is a confirmed case of pulmonary TB. Next, an ASHA worker noticed that a newborn in the village has not received any vaccine in first week of life. So, what is the question? What is the first step to the PHN should take? So, right is option C, arrange for birth dose vaccination, BCG, OPV and Hep B. Catch-up immunization must be started immediately. These vaccines are safe and effective even after day 1. Next, during a household survey, a PHN find that child has not received a single dose of routine immunization due to migration. किस कहीं और से आया बच्चा और उसने अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लिया है. Under which initiative should this child be vaccinated? So right is B, Mission Indraprasth. Mission Indraprasth target unimmunized and partially immunized children, including migrants, slums and undeserved population. Next, which national program provide राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK सर्विस? कौन सा प्रोग्राम RBSK सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सो राइट इज NHM, नेशनल हेल्थ मिशन. एक्सप्लेनेशन, RBSK is under NHM, aimed at early detection of 4 Ds. What are the 4 Ds? Defect at birth, disease, deficiencies and development delay. Children 0 to 18 year. राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम. Next, the role of PHN in MPCDCS include all except. कौन सा रोल नहीं है PHN का अगर रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम? सो ऑप्शन C, managing acute stroke emergency. PHN can't manage acute stroke emergency. She has to refer to the hospital. PHN is not responsible for managing acute stroke. That's for the hospital emergency care, and the role is screening, referral and education. Next, which indicator reflects effectiveness of antenatal care service? आप कैसे बोलेंगे कि एंटीनेटल केयर इज़ इफेक्टिव? व्हाट इज़ द इंडिकेटर? सो राइट इज़ C, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो. कितना मोर्टेलिटी रेशियो है मैटरनल में? सो बाय ऑन द बिहाफ ऑफ दिस रेशियो वी कैन indicate the effectiveness of antenatal care services. Now, some MCQs related to health schemes. Health schemes से related है कुछ question. So, first question is, when was the National Health Mission NHM launched? सो लॉन्च तो ये 2005 में हो गया था, लेकिन इसको मर्ज भी किया है. जो मर्ज कब हुआ है? ये 2013 में. 2013 में NHM
was formed merging NRHM and UHM on April 12, 2013. Which is a primary objective जननी सुरक्षा योजना? जननी सुरक्षा योजना का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? सो राइट इज बी, institutional delivery. JSwipe offer cash incentive for institutional delivery to reduce maternal and neonatal morbidity. Which scheme provide free antenatal care on 9th of every month? कौन सी स्कीम के अकॉर्डिंग हर महीने 9 तारीख को एंटीनेटल विजिट जो जितना भी होता है उनका अलग से डेटा होता है? सो दैट इज ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA mandate quality ANC on 9th day of each month. Next, what is the coverage amount per family under PMJ आयुष्मान भारत? तो कवरेज अमाउंट पर फैमिली अंडर PMJ क्या है? आयुष्मान भारत जो स्कीम है, सो दैट इज 5 lakhs. PMJ give 5 lakh per family annually for hospitalization. PMJ was launched in which year? So this was launched in 2018. It began on 23rd September 2018 in Ranchi, Jharkhand. NHM include which child health screening scheme? So this is the राष्ट्रीय बाल सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम. RBSK screen children for birth defect, disease, deficiencies and delay 4Ds. Next, which scheme ensure free drug diagnostic transport and diet for mother and infant? किस स्कीम के अकॉर्डिंग दौरान डायग्नोस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड डाइट फ्री में मिलता है मदर को भी और इन्फेंट को भी? सो दिस इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK. JSSK गारंटी फ्री सर्विस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स. एक JSY है, एक JSSK है. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल डू द मोर questions related to PHN, very important topics. So till that time, watch the video, like, share and subscribe my channel. Thank you.